Hello, my dear students. Welcome to all of you to my online learning class. Today, in this class, we are going to discuss about lesson 16, and the topic of lesson 15 is about some, any, no, much, a lot of, and a little. Let us know how to use these words. In our previous class, we have some idea about it. Today, we will discuss more about it. Before starting the class, remember that in this section we will discuss different types of question and their answer. Basically, the questions are yes or no type. Okay? First, we discuss about the word some, any, no, much, a lot of, and a little. We know how to use them. The word some used with uncountable and plural nouns. Plural mean more than one. Uncountable mean which is cannot count. A limited quantity between 5 and 10 when it is countable. माने जेतेबेले ताकू गणी होउथबो सेतेबेले तार क्वांटिटी माने परिमाण 5 रु 10 भितरे हेइथिबो. अर्थात सम वाटी अनकाउंटेबल पाखरे यूज हेइताय एवं काउंटेबल पाखरे मध्ये यूज हेइताय जेतेबेले तार परिमाण 5 रु 10 भितरे थाय. अनकाउंटेबल जेमति कि मिल्क, वाटर. The word any used in negative statement and in questions. अर्थात any word टी कोनोसी सेंटेंस टी जदि नेगेटिव स्टेटमेंट रे हेतिबो ताले सेठी any यूज हबो. नेगेटिव स्टेटमेंट कहले कोन से सेंटेंस रे नो लागिथिबो एवं प्रश्नवाचक वाक्य रे मध्य any यूज हेइथाय. The word no used for makes a sentence negative. It answers a yes or no question. Mean a no what टी गोटे सेंटेंस को नेगेटिव करि थाए. ए नो what टी yes or no क्वेश्चन रो आंसर मध्य हेइ थाए. एटा हम पूर्वरु जानचंती. The word much used with countable nouns or uncountable nouns in plural form. Much is commonly used in negative sentences and in questions. Much रा ओडिया मीनिंग होचे बहुत. The word a lot of used to express large quantities of something with both countable and uncountable nouns. अर्थात a lot of माने बहुत गुडाए. ए लॉट ऑफ वाट टी बहुत बेसी परिमाण को बुझाई थाए. बहुत काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल भी. ठीक अछि. ए लॉट ऑफ वाट टी पॉजिटिव सेंस रे यूज हेइ थाए. द वर्ड ए लिटिल used with countable noun. When we use a little, we mean there is a small amount of something. अर्थात a little word टी countable रे यूज हेइताय माने जोटी गणी होउथाय. ठीक अछि. जेतेबेले आमे a little यूज करि थाउ तार अर्थ होउची सेठारे किछि अल्प परिमाणर जिनिस थाए. सेई जगह रे आमे a little यूज करि थाउ. The word some, many, a lot of tell us about the number of things. mean এই ওয়ার্ড গুড়িক
कौनसी जिनिसर संख्या विषय कही थाए. One more thing, we remember that the word some, many, a lot of and a little used with positive sense. Okay, and the word any, no and much used with negative sense and question form. Let us read the lesson loudly with proper pronunciation. Here we see a glass and some water in it and two sentences about it. First, is there any water in the glass? Next, yes, there is some water in the glass. Here in the top of the screen we see some oranges on the plate and two sentences about it. First, are there any oranges on the plate? Next, yes, there are some oranges. Bottom of the screen we see a ink bottle and two sentences about it. First is there any ink in the bottle? Next, yes, there is a little ink in the bottle. What is our next sentence? Here we see at the top of the screen a well and two sentences each about the well. First, is there much water in the well? Next sentence is, yes, there is a lot of water in the well. In the bottom of the screen we see a river and two sentences are about the river. First is there much water in the river? Next, yes, there is a lot of water in the river. Now we see some picture and try to understand the meaning of the sentences deeply. Okay, first we understand some difficult English words, then we understand all the sentences meaning. Our first word is water. Water कहले कौन कहले पिला माने चित्र रे हमें देखि परचंती water कहले होची पानी. Our next word is glass. Glass कहले कौन कहले पिला माने glass कहले glass ओडिया रे glass ही कुआ जाए. Our next word is orange. Orange कहले कौन कहले पिला माने चित्र रे हमें देखि परचंती orange कहले कमला. Our next word is ink. Ink कहले कौन? Ink कहले काली. Our next word is well. तले well कहले कौन? चित्र रे हमें देखि परचंती well कहले होची कुआ. Next, river. तले river कहले कौन? ए पिक्चर हमें देखि परचंती river कहले होची नदी. All of my dear students, I think all of you understand the meaning of the words. Now we try to understand our sentences deeply. Okay? First, we see a glass of water and two sentences are about it. First,
Is there any water in the glass? Next, yes, there is some water in the glass. Now we see which glass there is some water on it. So our first sentence is about the glass. What is the question? Is there any water in the glass? Notice that the first word of the sentence is. It means is. The word is a helping verb. It means the question is yes or no type. Okay? So our second sentence is the answer of first sentence and it starts with yes. Okay? Now we understand the meaning of the words. Any कहले आमे जानचंती. Any कहले कोन? कौनसी. Water कहले पानी. In the glass कहले glass रे. ताले is there any water in the glass कहले कोन? Glass रे किछि पानी अछि कि? देखो एठी आमे ओडिया रे किछि यूज कले किंतु इंग्लिश रे कोन अछि? एनी. एपरि काहे कि हला ताले जेतु क्वेश्चन फॉर्म रे सम यूज हुए नाही तेणु क्वेश्चन फॉर्म रे एनी यूज कराइछि एवं जेहेतु पॉजिटिव सेंस रे एनी यूज हुए नाही तेणु सेठरे सम यूज हेछि. ताहले इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास रो अर्थात होछि माने होछि ग्लास रे किछि पानी अछि कि? आंसर कोन हला ताले? yes there is some water in the glass. yes कहले हो there is some water in the glass. ग्लास रे किछि पानी अछि. Here we see some oranges on the plate and two sentences about it. First is, are there any oranges on the plate? Next, yes, there are some oranges. Our first sentence is a question and it starts with are, and are is a helping verb. It means it is a yes or no type question. And second sentence is the answer of first question and it starts with yes. Okay, let us understand its meaning. Orange mean कौन पिला माने? Orange कहले होची कमला. Oranges कहले कमला गुडिको. On the plate कहले plate ऊपर अछि. ताले are there any oranges on the plate? Plate रे किछि कमला अछि कि? जेतु हेल्पिंग वर्ब फास्ट लागिछि तेणु हमरो ओडिया रे जते बेले क्वेश्चन हबो सेते बेले की लागि की हबो. ठीक अछि. ताले देखो किंतु इस सेंटेंस रे एनी लागिछि किंतु मु ओडिया रे किछि यूज कली. कोन पई ना हमरो इंग्लिश सेंटेंस रे सम वर्ड टी नेगेटिव सेंटेंस रे किंबा क्वेश्चन फॉर्म रे यूज हुए नहीं तेणु क्वेश्चन फॉर्म रे जेहेतु एनी यूज हुए तेणु ए सेंटेंस रे एनी यूज कराइछि किंतु ओडिया रे हमें ताकू किछि बोली कहिबा कोनोसी बोली कहिबा नाही. ठीक अछि. ताले आर देयर एनी ऑरेंजेस ऑन द प्लेट रो मीनिंग होछि प्लेट रे किछि कमला अछि कि? नेक्स्ट, yes there are some oranges. yes कले हो there are some oranges. हो सेठारे किछि कमला अछि. किंतु सेंटेंस रे देखो ऑरेंजेस अछि मो किंतु कमला कहिली ताहेले कोन प्लुरल हैला नाही कि? प्लुरल हैला केमिति? एठी मु किछि मध्ये कहिछि से दृष्टिरु ओडिया रे कमला गुडी को कहिबा दरकार नाही. हाँ सेठारे किछि कमला अछि. एई
वाक्यरू आमे बुझी पारुचंती जे कमला गुड़िक अच्छी किंतु इंग्लिश रे देख लिखाई येस देयर आर सम ऑरेंजेस इंग्लिश रे लिखा जाए किंतु ओडिया रे सेपरी न कहिले मध्य चले ठीक अछि। Now we see a ink bottle is here and two sentences about it. First, is there any ink in the bottle? Next, yes, there is a ink in the bottle. So our first sentence is a question and start with each. It's mean it is a yes or no type question and its answer is second sentence and it start with yes. Okay. Any ink कहले कौन ताले ऊपर आमे जो सेंटेंस गुडी को डिस्कशन कले ठीक सही बड़ा एटा हबो। एनी इंक कहले कौन ताले किछि काड़ी ठीक अछि। एनी कहले कौन अछि किंतु आमे ओडिया रे लिखिला बेले ताको किछि लिखिबा। एनी इंक कहले किछि काड़ी इन द बॉटल रे इज देयर कहले इज देयर एनी इंक इन द बॉटल कहले बोतल रे किछि काड़ी अछि कि एनी काहे के लागिला आ एनी को आमे ओडिया रे जते लिखुचंती सेते बेले आमे किछि काहे के लिखुचंती से विषय मु पूर्वरु कहिछि ताले तम बुझि पारलो। नेक्स्ट yes there is a little ink in the bottle a little कहले मु पूर्वरु कहिछि अल्प टिके ठीक अछि। a little ink कहले अल्प टिके काडी in the bottle रे अछि ताले सेंटेंस टीरो मीनिंग हैला yes कहले हां there is a little ink in the bottle कहले सेठारे माने सही बोतले अल्प टिके काडी अछि। Now we see a picture of a well and there are two sentences about it. First, is there much water in the well? Next, yes, there is a lot of water in the well. First sentence is starting with each. It's mean it is also a yes or no type question. And second sentence is start with yes. It's mean second sentence is the answer of first question. Okay. Let's understand. Much कहले कौन पिला माने much कहले कौन कहितली मु much कहले अधिक water कहले पानी well कहले कुओ ताहले is there much water in the well अर्थात कुओ रे बहुत पानी अछि कि बहुत चाह अधिक मध्य सही ठीक अछि। नेक्स्ट yes there is a lot of water in the well yes कहले हाँ there is a lot of water कहले हाँ बहुत पानी in the well कहले हाँ सही कुओ रे बहुत पानी अछि ठीक अछि। देखो एठारे जेतेबेले क्वेश्चन हेतिला सेतेबेले मच वाटर लागिथिला किंतु जेतेबेले आंसर हैला सेतेबेले ए लॉट ऑफ वाटर हैला काहे कि मु कहे जे मच वाटर नेगेटिव एवं क्वेश्चन फॉर्म रे यूज हेइताय एवं ए लॉट ऑफ वाटर पॉजिटिव सेंस रे यूज हेइताय तेनु ए लॉट ऑफ वाटर आंसर रे अछि एवं मच वाटर क्वेश्चन यूज हेछि ठीक अछि। Now we see the picture of a river and there is two sentences about it. First, is there much water in the river? Next, yes, there is a lot of water in the river. First sentence is starting with each. It's mean it is a yes or no type question. And second sentence is start with yes. It's mean the second sentence is for answer of the first question. Okay, let us
अंडरस्टैंड मच वाटर कहले मु पूर्व कही बहुत पानी इन द रिवर नदी रे रिवर कहले कौन नदी रे नेक्स्ट इज देयर मच वाटर इन द रिवर कहले कौन ताहले नदी रे बहुत पानी अच्छी कि नेक्स्ट यस देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर यस कहले हाँ देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर कहले नदी रे बहुत पानी अच्छी देख एठारे मध्य क्वेश्चन रे मच यूज होईची एवं आंसर रे ए लॉट ऑफ यूज होईची मु कहिची जे मच वर्ड टी क्वेश्चन फॉर्म रे एवं नेगेटिव सेंटेंस रे यूज होईता है एवं ए लॉट ऑफ वर्ड टी पॉजिटिव सेंस रे यूज होईता है तेणु क्वेश्चन रे मच यूज होईची एवं आंसर रे ए लॉट ऑफ यूज होईची आई होप all of you enjoyed this class.